Am I audible? Yes, yes. Thank you, sir. Thank you.
नमस्ते, आवाज आ रही है? जी वैसे नमस्कार। हाँ, आ रहे जॉन जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आशा करते हैं कि मेरा ऑडियो आपको सुनाई पड़ता है। गत 3 दिन से चले आ रहा है युवा विज्ञान सम्मेलन का शेष पर्याय में ये समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सभी विज्ञान प्रेमी, विज्ञानी और विज्ञान का छात्रों को अभिनंदन। युवा विज्ञान सम्मेलन भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का एक गुरुत्वपूर्ण अंग। Good afternoon, everyone, and a warm welcome to all of you at the valedictory function of Young Scientists Conference, which is an important event of India International Science Festival 2020. I, Jajati Kesari Naik, one of the coordinators for this event, present myself before this august audience to assist the final ceremony of this interesting event. As we look back 6 years ago, when YSC was conceptualized as a part of IISF in 2014, around 500 participants took part in YSC. Those 500 gave a momentum, and today, in the 6th edition of YSC and IISF, we are near about 2,000 young researchers who showed their interest to participate and take part in the discussion or to showcase their achievements. I feel extremely honored to introduce our chief guest of today's function, who kindly consented, Honorable Minister of Science and Technology, Minister of Health and Family Welfare, Union Government of India, Dr. Vardhan ji. After some time we will see him. विज्ञान की उपलब्धियों को महोत्सव के रूप में मनाने के लिए आदरणीय मंत्री जी का अनुप्रेरणा था। उनका निरंतर प्रोत्साहन के वजह से आज हम आईआईएसएफ का इस विशाल रूप को देख रहे हैं। इसमें भारत का विभिन्न वर्गों का भागीदारी रहा है। विशेषतः ये यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस युवा विज्ञानियों के लिए एक कोऑर्डिनेशन का सेतु बनने जा रहा है। The continuous encouragement of Honorable Minister to showcase the scientific achievements to common people and younger students led IISF to appear in such a grand form. One of the objectives of the grand event is to create a platform for seamless exchange of scientific ideas among young researchers. Hopefully, YSC is progressing towards setting a coordinating bonds between these young scientists of India. It is a privilege to have Honorable Minister as the chief guest of this function, or to address some the august audience, deliver some message. Since the inception of IISF and YSC,
Vigyan Bharati is one of the key stakeholders of this grand event, which promotes creating an environment of scientific temperament and beliefs. The concept of introducing the scientific achievements to common people, basically those who are not able to visit scientific laboratory and feel the charm of science. Vigyan Bharati believes Loka Kalyana Vijnanam. It propagates cumulative scientific wisdom of India with all its purity and promotes rational systems of thought in synchronization with modern needs. Sri Jayanta Sahasrabuddhiji, Honorable National Organizing Secretary of Vigyan Bharati, is also present among us to motivate the audience with his inspiring words. The participants are definitely eagerly waiting to know the results of their presentation, as there is a declaration that best presentations will be honored. Since all our guests have arrived today to grace this occasion, and I now invite Dr. Sumit Kumar Misra, Principal Scientist, National Physical Laboratory, CSIR, New Delhi, and coordinator of this event, to welcome our guests and say a few words in his welcome address. नमस्ते, सभी को सादर वंदन। मैं डॉक्टर सुमित कुमार मिश्रा, प्रधान समन्वयक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी की मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थित के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के समापन सत्र में आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद व आपका मार्गदर्शन हमारे युवा वैज्ञानिक मित्रों के मस्तिष्क पटल में एक नई ऊर्जा का स्पंदन करेगा। सर, आपकी उपस्थिति से हम सभी अनुग्रहित हैं। आज के समापन सत्र में आज हमें माननीय जयंत सहस्त्रबुद्धे, जो कि विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। जयंत जी युवा वर्ग के लिए प्रेरणा पुंज हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। मैं हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी युवा वैज्ञानिक प्रतिभागियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने वाईएससी में अपने शोध कार्यों की प्रस्तुति की और विशेषज्ञों से भी चर्चा में प्रतिभाग किया। मैं आज युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के समापन सत्र में अपनी बात को संस्कृत के श्लोक के साथ संवेद देना चाहूंगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यद्य एव सः। It means it blasts many doubts, foresees what is not obvious. Science is the eye of everyone. One who has not got it is like a blind. तो ये महत्व है हमारे विज्ञान का। सर, IC 2020 में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लगभग 2000 युवा वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। इसमें 600 प्रतिभागी ने अपने शोध कार्यों को 45 समानांतर सत्रों में प्रस्तुत की, जो कि भारतीय विज्ञान के इतिहास में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहल है। इस बार की युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर भारत था, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न विषयों में ऐसे वरिष्ठतम शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया है, जिनके स्वयं के स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स के अनुभव हमारे युवा प्रतिभागियों के अनुसरण योग्य हैं। विशेषज्ञों के उद्बोधन के अतिरिक्त हमने आत्मनिर्भर भारत विषय पर पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा हुई, तथा मध्यस्थता श्री साकेत मोदी जी, जो कि भीम ऐप की सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। पैनल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने भी प्रतिभाग किया। हमारे युवा वैज्ञानिक प्रतिभागियों ने भी अपनी जिज्ञासाओं को कि कैसे उनके शोध कार्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उनका योगदान कर सकते हैं, इस विशेष पर भी विशेषज्ञों से चर्चा की। आत्मनिर्भर भारत के अतिरिक्त हमने समसामयिक विषयों जैसे कि वर्तमान महामारी व भविष्य के संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व गांव के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व आदि विषयों पर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल विषय पे भी विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही युवा वैज्ञानिकों के लिए भविष्य में उनके करियर के दृष्टिकोण से क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर प्रोफेसर संदीप वर्मा जी, सेक्रेटरी साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डॉक्टर मोनिका जी, जो कि फुल ब्राइट कमीशन के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका उद्बोधन हुआ और इससे हमारे सदस्यगण, हमारे जितने भी प्रतिभागी थे, काफी कुछ से उनको लाभान्वित हुआ। सम्मेलन में हमें विभिन्न विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर राम गोपाल राव जी, निदेशक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के निदेशक, प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी, निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड प्रोफेसर वीपी भट्टर जी, अध्यक्ष विज्ञान भारती का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं भगवत गीता के श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्सर्व योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। There is no purifier as great as knowledge. He who has attained purity of heart through a prolonged practice of karma yoga automatically sees the light to truth is the self in course of time. धन्यवाद। जजात जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। Oh, sorry. Yeah, thank you, Sumit ji. I don't know whether it would be proper or not to share a story with this enthusiastic audience. A young sannyasi was climbing to the top of a mountain to meet one saint and rishi who was staying there. While climbing, he saw a small girl of age around 10 or 11 was also climbing with the on the mountain and putting her brother on her shoulder. Brother is younger to her. So looking at the difficulties of the young girl who could not hold her brother properly, the young rishi or young sannyasi was a little bit perturbed because obviously because of his good nature. So he was praising the girl for her duty towards her brother, but perturbed due to the difficulties. However, the girl was still moving with a smile. The young rishi approached the girl and asked her, "Should I help you? तुम्हारा भाई को मुझे दे दो तो तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा." The girl replied, "मेरा भाई है, बोझ कैसे? मुझे कष्ट नहीं लग रहा है." The young sannyasi was surprised and then started climbing to the top to meet the saint and the rishi. The rishi was laughing when he met the young sannyasi, and rishi told, "तुमने उसको देख के कर्तव्य बोध ही समझा, परंतु वो तो उसका स्वभाव सहज भावी था, इसलिए उसको कष्ट ये जो उसका भाई को ऊपर ले रहा था उसको बोझ नहीं लगा." So point is that sometimes with the scientific thing, certain things are our duties. Hence we define scientific responsibilities or social scientific responsibilities. Probably at this moment the country needs much more than that. So that is possible when we develop the easiness of doing science and creating an atmosphere, or develop the so-called swabhav or sahaja bhav with our fellow colleagues and the society. Then only we can have a society with scientific awareness and also can create an ambience for good research. And hopefully with this kind of basically words, I would invite a person who has that kind of feelings and try to give some message to the young audience. I would invite Sri Jayant Sahasra Buddheji, Honorable National Organizing Secretary, Vigyan Bharati, to say a few words to this audience. Jayant ji. नमस्ते। यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस इस कार्यक्रम के सूत्रधार सभी मेरे बंधुवर, डॉक्टर जजाति जी, डॉक्टर सुमित जी मिश्रा, डॉक्टर विकास जी और उनके सारे अन्य सहयोगी और इस कार्यक्रम से जुड़े युवा वैज्ञानिक, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जैसे जजाति जी ने बताया कि 6 साल से, यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जब से प्रारंभ हुआ तब से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम कर रहे, उसको इस साल भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से संपन्न किया। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं
और कुछ मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम सब जानते हैं कि इस साल हमने बहुत ही कठिन परिस्थिति में ये अपने देश का विज्ञान महोत्सव संपन्न करने का विचार किया। सब प्रकार की विषम परिस्थिति थी, लेकिन सभी ने संकल्प बना लिया कि नहीं, इस श्रृंखला को हम टूटने नहीं देंगे, इस विषम परिस्थिति में भी इसको करके दिखाएंगे। और मुझे आनंद हो रहा है कि इस समय इस कार्यक्रम के साथ लगभग 1 लाख के आसपास प्रतिभागी जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अभी अभी मैं एक कार्यक्रम से बाहर आया तो वहां पर एक विश्व कीर्तिमान जो हम प्रतिवर्ष IISF में करते हैं, ऐसा लगातार तीसरे दिन तीसरा कीर्तिमान इस उत्सव में हो गया। तो इस प्रकार की कई अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें इस उत्सव के दौरान हो रही है। इस कठिन परिस्थिति में भी इस प्रकार का उत्सव करना, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, ये शायद पूरे विश्व के लिए एक अनोखा उदाहरण साबित होने वाला है। और आप सबकी सहभागिता भी उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम सब जानते हैं कि इस समय इस कार्यक्रम की जब चर्चा शुरू हुई तो वो दिन था 20 अक्टूबर, यानी लगभग 2 महीने पहले इस कार्यक्रम की पहली बार चर्चा हुई, जिसमें निश्चित हुआ कि इसको इस साल करेंगे ही करेंगे। नहीं तो सबको लग रहा था कि इस विषम परिस्थिति में कैसे करेंगे, लेकिन 2 महीने में इसको करने का एक प्रकार से संकल्प किया और इस चुनौती को स्वीकार किया CSIR ने और विज्ञान भारती के सारे कार्यकर्ताओं ने। और उन्होंने ये निश्चय किया कि नहीं, 2 महीने में समय तो कम है, लेकिन जरूर इसको करके दिखाएंगे। आजकल हम सारे 2020 क्रिकेट मैचेस से परिचित है और ये भी IISF 2020 है। तो उसी प्रकार से सब मिलकर हम खेलेंगे और इसको करके दिखाएंगे, यही बात सबके मन में थी। और उसी का परिणाम है कि आज ये बहुत बड़ा विज्ञान महोत्सव अब यहां पर हो रहा है। इस समय की जब सेंट्रल थीम क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा हुई, तब स्वाभाविक सबके मन में बात आई कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की घोषणा की है। Our Prime Minister has given a clarion call of Atmanirbharta to all of us, and he is expecting great response, especially from young minds of our country. तो स्वाभाविक है, हमने सोचा कि आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान, ये तो हम जरूर करेंगे इस साल। लेकिन उसी समय और एक चर्चा आई कि इस विषम परिस्थिति में अपने देश के वैज्ञानिक, पूरे देश के वैज्ञानिक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी के ऊपर जीत कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो सभी ने ऐसे सोचा कि भारत के लोगों ने इस विषम परिस्थिति में आत्मनिर्भरता के लिए तो सार्थक प्रयास किए। जैसे कई प्रकार की बातें हम अपने देश में बनाने लगे, PPE किट हो वगैरह, अन्य सब प्रकार की ऐसी बातें। लेकिन हमने इस समय और एक बात का ध्यान रखा कि पूरे विश्व में ऐसे भी देश है जहां पर इन सारी बातों को करना संभव नहीं है। तो अपने देश में सबसे पहली ये बात आई कि ऐसे देशों को भी हम जरूर सहयोग करेंगे, उनको सहायता करेंगे सब प्रकार की। और भारत एक ऐसा देश विश्व के सामने आया कि जिसने अपने केवल पड़ोसियों को नहीं, तो विश्व में जहां जहां पर बड़ी आवश्यकता थी, ऐसे सारे लोगों को सब प्रकार की सहायता करने का मन बना लिया और वो प्रत्यक्ष किया भी। अपना चरित्र ही ऐसा है भारत का। हमारे देश में सदियों से इस विश्व के बारे में क्या धारणा रही कि ये पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अभी अभी जो आधुनिक जगत में कल्पना आई ग्लोबलाइजेशन की, उसमें क्या आया, दिस एंटायर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मार्केट, बट वी नेवर लुक्ड एट इट एज अ मार्केट, ऑलवेज वी लुक्ड एट एंटायर ह्यूमैनिटी एज अ पार्ट ऑफ वन फैमिली। हमारे लिए तो यह पूरा विश्व एक परिवार है। और इसलिए हमने इस समय यह भी सोचा कि आत्मनिर्भरता के साथ
भारत सदियों चरित्र समझता है कि केवल अपने लिए नहीं तो संपूर्ण विश्व के लिए हमने कुछ न कुछ करना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता के साथ हमने विश्व कल्याण की भी बात जोड़ी। आत्मनिर्भर भारताय विश्व कल्याणाय च विज्ञानम, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, इस प्रकार की कल्पना लेकर हम आगे बढ़े। इस समय मुझे और एक बात का स्मरण होता है कि इस समय इस विषम परिस्थिति में हमने ये किया, इतना ही नहीं तो सदियों से विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने विश्व को बहुत दिया है। जैसे मुझे बार बार स्मरण आता है कि भारत ने विश्व को दशमूल पद्धति दी, डेसिमल सिस्टम ये दी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 0 से 9 अंक मिलने के कारण पूरे दुनिया को गणित बहुत सरलता से समझने लगा, और जहां पर लोग रुके थे उनके पास शून्य की कल्पना ही नहीं थी। भारत ने विश्व को शून्य जैसा एक बड़ा विश्व में सबसे योगदान दिया, और ये योगदान कितना बड़ा है तो आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने भी कहा कि वी ओ लॉट टू इंडियंस बिकॉज दे हैव टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच this great development of science would not have been possible. So that is how our ancestors, we Indians, have proudly contributed to the development of science all over the world. हमने विश्व को इतनी सारी बातें दी है, ये केवल अपने देश तक सीमित नहीं रखा, हमने पूरे विश्व को दिया, और ऐसी कई बातें। अपना देश पूरे विश्व में बहुत ज्ञान का केंद्र इस नाते प्रसिद्ध था। इसलिए 2020 की बात जब करते हैं तब मेरे मन में बार बार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का स्मरण होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने 1996 में 1996 to 1998 he took up a great exercise for evaluating what we should do for making our country, transforming our country as a developed country. उन्होंने he presented a vision document for that road, that how we should cross this road. He presented a kind of roadmap to all of us in a vision document called as Vision 2020. और उसके तहत उन्होंने क्या बताया, क्या करना चाहिए हमें। एक बार मुझे एक ऐसा संयोग मिला कि पुणे में एक बार एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम को आए थे, 2006 की बात, और वहां पर सारे युवा आपके जैसे वहां बैठे थे जिनको सर्टिफिकेट्स लेने थे ग्रेजुएशन के। वहां उनको अब्दुल कलाम जी ने ये जो विकसित भारत का सपना बताते समय क्या कहा, उनका बड़ा एक सुंदर वाक्य आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा, लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा, ऐसा उन्होंने कहा। नालंदा का अर्थ क्या है कि दुनिया में जब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, इसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी, उस समय भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालय क्या होता है ये बताया। और केवल एक नालंदा नहीं था, आज के पाकिस्तान में तक्षशिला है, और ऐसे कई प्रकार के विश्वविद्यालय। नीचे अगर दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर आपको कांचीपुरम का विश्वविद्यालय मिलता है, विक्रमशिला है, ऐसे कई विश्वविद्यालय अपने देश में थे। और विशेषता ये थी कि ऐसे सारे विश्वविद्यालयों में दूर दूर के लोग, पूरे विश्व के कोने कोने से छात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। तो अब्दुल कलाम जी का कहना क्या था कि लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा मींस व्हाट, ही सेड वी नीड टू डेवलप अवर कंट्री इन सच अ मैनर दैट इंडिया शुड बिकम अ नॉलेज हब फॉर एंटायर वर्ल्ड। इस प्रकार की बात उन्होंने कही, यानी अपना देश विश्व के लिए ज्ञान प्राप्ति का केंद्र बनना चाहिए, ये उनकी कल्पना थी। भारत विकसित होगा यानी क्या होगा, तो ज्ञान प्राप्ति का केंद्र होगा। इसका सरल अर्थ क्या निकलता है कि इस देश में ज्ञान का सृजन होना चाहिए। वी नीड टू जनरेट नॉलेज, then only we will be able to attain this kind of status in this world. तो हमें क्या करना चाहिए, आज विज्ञान के युग में
विज्ञान के द्वारा जो अनुसंधान होता है, विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध कार्य होता है, उसके द्वारा ही ज्ञान का निर्माण होता है. Today, in this age of science, knowledge gets generated because of this scientific inquiry and all kind of research work in the domain of science. हमने अपने देश में वर्तमान में इस बात को करना चाहिए. टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे ज्ञान रहता है. जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेद जी टाटा को क्या, जमशेद जी को उन्होंने कहा, जमशेद जी, लोहा निर्माण का उद्योग खड़ा करने के लिए यंत्र और तंत्र आपको अमेरिका के लोग दे सकते हैं. ब्रिटेन के लोगों ने तो आपको नहीं दिया, अमेरिका के लोग शायद देंगे आपको. लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि यंत्र और तंत्र के पीछे जो मंत्र होता है, ये लोग आपको सहज रीति से नहीं देंगे. उस मंत्र का विकास तो हमें अपने देश में ही करना चाहिए. All these people can provide us technology, machines, and so many kind of engineering feats, but they will not give us in straight manner a knowledge behind those kind of technologies. We need to develop that kind of knowledge on our own in our own country. That is what is expected. And if we can do that, then we can become great. हमें इसको ठीक तरह से समझना चाहिए कि जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, तब हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि इंपोर्टेड नॉलेज के आधार पर हम अपने देश को विकसित नहीं कर सकते. विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अनुसंधान करते करते अपने देश में ज्ञान का निर्माण करना, ये हमारा दायित्व है, और तो ही आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकती है. इसको हमें ठीक ध्यान में रखना चाहिए. और यही विजन 2020 का डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का हम सभी के लिए संदेश था. और आपके जैसे युवा वैज्ञानिक जो अपने देश के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, उनके हाथ में ये सारी बातें अब आ चुकी है. उन्होंने इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश में ज्ञान का निर्माण कैसे होगा, और उसी ज्ञान को अपने देश में पढ़ाना चाहिए, और उसी ज्ञान को दूसरे देशों में भी पढ़ाना स्वाभाविक रीति से चाहिए. इस प्रकार का विचार हमें करना होगा. आत्मनिर्भरता के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है. और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति इस दिशा में हम सभी ने करनी है. उसी के साथ साथ हमें और एक बात इसी के साथ जुड़ी हुई वो ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना, जैसे जजाति जी ने एक बड़ी सुंदर कथा हमें बताई कि अपने बांधवों के लिए, उनका विकास करने के लिए हम ही को काम करना है. अपने देश की समस्या, अपने देश के समाधान, समाधान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना नहीं है. और इसी में से ये ज्ञान निर्मिति का मार्ग खुलता है. समस्या अपनी है, समाधान भी अपने होंगे. इस सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे. जैसे आजकल बताया जाता है, इस शाश्वत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए व्हाट आर द टुडेज मॉडर्न मंत्रास फॉर अचीविंग और अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल. यानी अपने देश में इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना कि अपनी देश की समस्या और समाधान भी अपना. इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है. अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम सब अपने देश के लिए आत्मनिर्भरता जल्दी प्राप्त कर पाएंगे. लेकिन जैसे मैंने उल्लेख किया कि हमें विश्व कल्याण के लिए भी काम करना है, और ये भी बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत हमेशा विश्व कल्याण की बात करते आया है. इसलिए इस वर्ष का जो भारत के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का एक केंद्र बिंदु है, जो कल्पना है, वो है आत्मनिर्भर और विश्व कल्याण, दोनों के लिए विज्ञान का विकास. इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे और अपने अपने स्थान पर, जहां जहां पर हम काम करते हैं, अनुसंधान संस्थान में, शिक्षा संस्थान में, वहां पर इस बात को ध्यान में रखकर अपने अपने काम को करना, इसकी बड़ी आवश्यकता है. और यही ये 6th IISF का संदेश है, ऐसा मैं मानता हूं. मुझे विश्वास है कि आप सभी ने
इस संदेश को जरूर समझा होगा, और केवल समझा ही नहीं होगा तो आपने संकल्प किया होगा कि इस संदेश को अपने जीवन में उतार कर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि अपने देश की आज की स्थिति बदल जाएगी और अपना देश विश्व का एक सिरमौर देश बन पाएगा। इसी सपने को साकार करने के लिए हम सबको काम करना है, और सारे अपने देशवासी युवा वैज्ञानिकों की ओर बहुत अपेक्षा से देख रहे हैं। और मुझे विश्वास है और आनंद है कि आप सभी इस संदेश को लेकर अपने अपने स्थान पर इस उत्सव के बाद लौटेंगे और इस बात को साकार करने का प्रयास करेंगे। फिर एक बार सभी को बधाइयां देते हुए मैं यहीं पर रुकता हूं। नमस्कार। Thank you, Jayanji. Since last three days, we had 3 review talks, 27 plenary presentations by eminent researchers, also panel discussion on career opportunities, self-reliant India, and near about 600 presentations by young researchers. And we have basically 43 parallel sessions. So this is a unique kind of thing. And we received huge response as 1992, close to 2000 registrations were there, and 834 abstracts we received for YSC. Around 120 resource persons enriched the YSC event, and now the time has come to make an end of the voting and eagerness to declare the result. Before we listen to the message of Honorable Minister, so let us declare the results. I invite the theme coordinators to declare first, second, and third prizes for the best presentations in each theme. And first, I invite Dr. Ashok Sharma of AIMS to declare the results of pandemic and crisis. And Dr. Sharma, can you mute, or the host is requested to mute Dr. Sharma's? Yeah, the host should unmute Dr. Sharma. Thank you all the panelists and thank you जगाती जी। And सबसे पहले मैं जयंत जी को प्रणाम करता हूँ। Hello. So the theme, which are only current pandemic and future crises, there are 61 applicants are selected to present their work, and session going very well, and all the maximum 58 applicants are applied. Out of that, we selected 3 persons by the jury. First, we selected Dr. Nimesh Gupta from the NII. He presented his work on the COVID, and he presented that more than 70% Indian population already have the antibody. That is a reason Indian population have the less effect of the COVID, and mortality rate is approximately 2%. So that kind of work he presented. And second work is presented by THSTI, Dr. Amit Dutt student. He is a PhD student, and he presented the work about COVID models on the mouse model. And third one is Dr. Kunal Datta. So he's basically work on a novel peptide analog of spike glycoprotein shows antiviral property against SARS. So these are the 3 people we are selected for these awards. Thank you, sir. Okay, so can you declare their institution affiliation, or till now you have already went through this YSC login ID? No, sir. I just have the YSC login ID. Okay. Login. Okay. So okay. Thank you, Dr. Sharma. Yeah. Right now. I will share with you. Okay. Okay. So basically, we would
declare all these results in the website. You can get it. And so as a in the valedictory session, we are as a principle, we tried to try not to know the institution, only went through this YSC delegate ID, and then finally we thought we would explore their institutions. So to make the process fair. Yes. So right now I would invite Dr. M.M. Tripathi to declare the results in his theme. Dr. M.M. Tripathi, are you there? Okay, so next I would request engineering sciences for engineering sciences, Dr. Suresh Das of IIT Bhubaneswar. So please declare your results. Thank you, Jajati. In engineering sciences, there were 57 presentations, and from which the first award goes to Mr. Avilas, having YSC ID YSC 14293, and the topic of his presentation was sustainable processing of secondary resources for extraction of strategic metals. The second award goes to Mr. Kadripati KN, whose YSC ID is YSC 14813, and he has presented a very novel topic on Kalam engine, electro-hydrodynamic ion momentum thruster for space propulsion system. And we have the third selected winner is Lichambam Menon Devi. Her YSC ID is YSC 15173, and her presentation title was Arsenic Occurrence and Accumulation in Soil of Upper Assam in India. So these are the three winners from engineering sciences. Thank you. Thank you, Sureshji. And I hope you have the data for the mathematics. Yes. Yeah, please share. Okay, in mathematics, there were very interesting 16 presentations, and from which the first rank goes to Miss Mary Elizabeth Anthony, and her YSC ID is 21810, and the talk title was The Else Lies in Lattice Theory. It was a very nice talk and very much appreciated by all the jury members. Similarly, the second position goes to Mr. Doyle Pandey, having YSC ID 15031, and the title of his abstract was Electro-osmotic Flow and Ion Transport within a Nanopore. The third award goes to Miss Nikita Singh. Her YSC ID is 14830, and the topic of her presentation was a mathematical study on stability of a dynamical system, coexistence of a prey-predator model. So they were very interesting talks, and all were very much appreciated by the jury. That's all. Thank you. Thank you, Sureshji. So I would invite Dr. Arvind Meena, scientist NISCARE, to declare the results of biology. Basically, biology is our hot area. So we have so many highest response from the biology because they are biochemistry, biotechnology, botany, zoology, all sorts of areas over there. So there is very tough competition. Also, large number of juries were there. I would invite Dr. Arvind Meena to share his results. Thank you, Jajati ji. Namaskar, Jain sir ji, and all panelists. As we have received around 198 abstract, total number of abstract, and we conducted around 11 parallel sessions where we accommodate all participants to present their work. It was really difficult to select only 3 best pupil out of 198. Still,
We have first prize goes to YSC 209964 Anushri Mahanta, postdoctoral fellow from Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine. Our second prize goes to YSC 22170 ID Prashant Singh, PhD from Institute of Microbial Technology, Chandigarh. And our third prize goes to YSC ID 22552 Shiv Murat Yadav, PhD, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Arvindji. And we have also one session on artificial intelligence. Dr. was supposed to read results. He had sent it. Let me read the results of artificial intelligence, quantum computing, and robotics. The first prize goes to Nilanjan Mukherjee. Title was Research on Artificial Intelligence, Quantum Computing, Robotics. Sorry, the theme was Artificial Intelligence, Quantum Computers, Robotics, and Applications. So his delegate ID is YSC 22331. YSC 22331, Nilanjan Mukherjee. So from IIT Kharagpur, he's a PhD student in IIT Kharagpur. The first prize goes to him. And second prize goes to Sriketa Parui from again IIT Kharagpur. Delegate ID is YSC 15122. So, and third prize goes to Dipti Singh, a BTech student, MBJ College of Engineering. YSC ID is YSC 12946. So these are the results of artificial intelligence. And now I request the theme coordinators of chemistry to share your results. Chemistry, either Dr. Ayan Datta or Professor Padmaja Misra. Professor Ayan Datta or Dr. Padmaja Misra, anybody can present your result. Yeah, Dr. Padmaja Misra or I. So probably host has to unmute. I think, am I audible now? Yes. Good afternoon. For chemistry, the first prize go to Lisa Moni Kolita with ID YSC 20126. The second prize go to Sunita Kumari with ID YSC 14520. And the third prize go to V. Divakar with ID YSC 14874. Okay, thank you. And this Self-Reliant India, Dr. M.M. Tripathi or somebody, Sumit ji. So I think I don't have results with me. So Dr. Tripathi somehow he could not join because of his engagement. So yeah. So who are the results? Please coordinate. Yeah. So then by the time, let me declare the result of physics. Yes, so I will do. Yes. Suraj is declaring for that. Okay. Yes, Suraj ji. Yes. So from Self-Reliant India theme, on behalf of Dr. Madan Mohan Tripathi, the coordinator, I hereby declare the first prize or first presentation goes to Mr. Anupama JP. Mr. Anupam JP, delegate ID is YSC 13911, and the title of the presentation was Online Voting System Using Firebase ML Toolkit. The next second award goes to Mr. Anuj Krishna, whose delegate ID is YSC 18177, and the title of the presentation was Growth of Thermoelectric Single Crystals for the Development of Thermoelectric Power Generators. And the third award goes to Mr. Sorup Kumar Parida, having delegate ID YSC 18074,
and the title of the presentation was Next Generation Molecular Breeding for a Food Sufficient Future. That's all from the Self-Reliant India theme. Thank you. Okay, and this physics, I think the physics is only left, and physics is the first prize goes to Praveen Kumar, delegate ID YSC 13396. I think he is from Vikram Sarabhai Space Center. And second prize goes to Deepak Kumar, YSC 12583, and the affiliation till now that information I don't have. And third prize goes to Suraj Pati, YSC 17614. So these are the results of physics. Environment is there. Environment. Dr. Atul Srivastava. Yeah. Okay. Yeah. So environment is there. So please share your results. Am I audible? Yes. Yes. Okay. Thank you, Jayati. So as in the other theme, in the environmental theme also, we have received total 49 abstracts, and which was judged by our expert jury members in 10 different sessions. So though the competition was tough, very tough, but with the help of our expert jury members, we have come up with the top three presenters. So the first prize goes to Miss Swaleha Inamdar, who is she is a PhD scholar at IITM Pune. Her registration ID is YSC 20723, and the title of her talk is an overview of iodine chemistry over the Indian and Southern Ocean waters using SIP-based observation and modeling. And the second prize goes to Dr. Prasannaji, who is the faculty member of Graphic Era Hill University, Dehradun, and his delegate ID is YSC 20481, and the title of his talk was Bioremediation of E-Waste through Indigenous Microbes. And the third prize goes to Dr. Aswini Ranade. She is a scientist at the National Institute of Hydrology, Roorkee, and her registration ID is YSC 17144. The title of her talk was the Meteorological Information System for Weather and Climate Change Research. Okay, thank you all, the theme coordinators, juries. So you have done a fantastic job, wonderful job. But so let me tell these participants. So this is not a basically selection. It's some kind of motivation to somebody. But these awards doesn't mean should not discourage others. So and I hope the main moment that we are waiting for is the award ceremony, award declaration that we have done. So before that, we have a couple of announcements that all the certificates you will get it online. Once when you log in, you have to log into your web portal, and then you can download these certificates. And it will take time to prepare all those certificates because whole IISF we have around 30,000-40,000 participants, so all the certificates would be prepared at a single time, so it will take time. So all the certificates, including participation certificate and award certificate, you can download. So number one. And number two is that we have the system as in physics, in YSC we had declared that not only this 1, 2, 3, we have also selected the some candidates. Those talks would be basically sent for regular journal publication, so that we would communicate to you for your full article, and then we can proceed. And obviously it will take 2 to 3 months for the full article, collecting the full article and send for review. So we are contacting the journals, regular journals, and then we will go on. And the rest of the articles should be published as a conference proceedings. So that's all. And the event is going to be over, and we will feel relaxed after maybe half an hour or 1 hour. And everyone is eagerly waiting for the final orders of the today. So to keep enthusiasm of young researchers, we would right now our technical team would connect to Minister's office, Honorable Minister's office. So Binoyji, please connect to Minister's office for Honorable Minister's office for his final and valedictory address. Please go ahead, Binoyji.
Dear young scientists, ladies and gentlemen, today is the last day of this vibrant Young Scientists Conference, which has been organized as a part of this year's India International Science Festival. Eminent scientists from various fields, who are also my colleagues in the field of science, kick-started this event on December 22nd. Thank you, Dr. K. Sivan, Secretary, Department of Space, and ex officio Chairman ISRO, Professor Ram Gopal Rao, Director IIT Delhi, Professor Randeep Guleria, Director AIMS Delhi, and Professor Urbasi Sinha from the Raman Research Institute, Bengaluru. I have been informed that the conference activities revolved around very interesting themes such as self reliant India, the ongoing pandemic crisis and its challenges, artificial intelligence, quantum computing and robotics, science and technology for rural development, frontier areas of applied and basic sciences, as well as career opportunities in these areas for young scientists. The organizers have told me that this conclave has brought together 2,000 young scientists, researchers, PhD scholars, postdoctoral fellows, and entrepreneurs under the age of 45 from various universities, postgraduate colleges, engineering colleges, R&D organizations, national laboratories, IITs, NITs, as well as industries, all of who have deliberated on cutting edge research and have also exchanged innovative ideas. I feel that this gathering of young scientists is one of the most important aspects of the science festival. This and many such conferences that include and enhance the role of young scientists shall augur a beginning towards India becoming a stronger nation, one that has young, ignited minds who are concerned about the progress and welfare of people and who are looking for solutions to improve the quality of living of human beings. I expect our young scientists to be inspired enough and to get into scientific research programs and projects for economic development. This is our national challenge in this century. Our young and budding scientists have to think out of the box and come up with interdisciplinary research models and programs to solve common people centric problems through interventions of science and technology. While we demand our young minds to play such a crucial role in nation building, I keep wondering how to fire the imagination of our young scientists who are the foundation for cutting edge research and the only ones who can usher in a renaissance in Indian science. Many times, I have considered that to attract the best minds to science research at the MSc and doctoral programs, it is essential that an exclusive science cadre is introduced to facilitate a career in well known scientific laboratories and universities. This idea has been under my consideration, and I hope to give it wings during this very tenure of mine as Science and Technology Minister. My dear young friends, I hope you have all cherished the deliberations held during the Young Scientists Conference. I would say that our efforts have been successful if all of you tell me that you feel enthused by what you saw, what you heard, and what you exchanged here. Science means constantly walking a tightrope between blind faith and curiosity, between expertise and creativity, between bias
and openness, between experience and epiphany, between ambition and passion, and between arrogance and conviction. In short, between an old today and a new tomorrow. Your knowledge belongs to humanity and is the torch which shall illuminate the world. If you believe in this, then this fundamental belief shall lead to science that has the potential to change the face of your country and of the world. I want all of you, young scientists, to use all your creativity and science to do what is noble in your profession. Use science for the good of mankind and not for destruction. Bridge the gap of inequality between rich and poor. Ensure the balance between mankind and nature through sustainable living and reduce the disease burden, thereby improve the quality of life of the common man. My dear young friends, science is not easy. You will face many failures before success kisses your forehead. I want you to strive to achieve the goals that I have laid out for you and persevere despite all failures. My best wishes shall always be with you, and success shall touch your feet. Many thanks for inviting me to this conference and giving me the opportunity to share my thoughts with you all. My love and blessings to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Honorable Minister, for this message, and hope we, the young scientists of this country, should basically fulfill the expectation of this country. One day, maybe we would create the next generation again. So, the next generation of scientific environment. So, thank you very much. And I would invite Dr. Vikas Sinha, Dr. Vikas Jana of CSR IMMT, Bhubaneswar, to deliver the vote of thanks. Dr. Sinha, Dr. Jana. So good afternoon to all. Respected Honorable Minister of Health and Family Welfare, Science and Technology, Earth Sciences, and the Vice President of CSR, Dr. Vardhan ji. Respected National Organizing Secretary, Vigyan Bharati, Sri Jan Sasavadhe ji. It is a great honor and a privilege to me to propose vote of thanks before the galaxy of eminent personalities witnessing this event. I extend my hearty vote of thanks to each and everyone for gracing this event. First of all, on behalf of Young Scientist Conference, India International Science Festival 2020, I express our heartfelt thanks and gratitude to our respected Honorable Minister, Dr. Vardhan ji, for gracing this occasion as chief guest, giving us time out of his occupied schedule and delivering thoughtful address. On behalf of Young Scientist Conference, I express our profound gratitude to our respected Sri Jan Sasavadhe ji for gracing this occasion as guest of honor and delivering the address. We ever remain grateful to you, sir. We express our sincere thanks to our distinguished invitees, review speakers, plenary speakers, research persons to make this event successful. We express our sincere thanks to respected Secretary DSIR and DGCSR, Dr. Shekhar C. Mande, Dr. Ranjan Agrawal, Director CSR NISCAR, and Dr. Arvind Ranade, Chief Coordinator IISF 2020 for their suggestion, encouragement, and support throughout during this event to make this event successful. I would like to take this opportunity to place a record on sincere thanks to all our coordinators, our Dr. Sumit Misra, Scientist CSR NPL New Delhi, Dr. Jajati Naik, Scientist VECC DI Kolkata, Dr. Arvind Meena, Scientist CSR NISCAR New Delhi. And also, I pay sincere thanks to all our
Team coordinators, Dr. Padmaja Prasad Mishra, Scientist SINP Kolkata, Dr. Ayan Datta, Professor ISS Kolkata, Dr. Mala Reddy, ISR Kolkata, Dr. Suresh Ranjan Das, Professor IIT Bhubaneswar, Dr. Somnath Gosal, Professor IIT Kharagpur, Dr. Gauri Shankar Sahu, Central University, Himachal Pradesh, Dr. Madan Mohan Tripathi, Professor Delhi Technical University Delhi, Dr. Ashok Sharma, Professor AIMS Delhi, Dr. Atul Srivastav, Scientist IITM Delhi, for their great support and team spirit to organize this event. I also express my sincere gratitude to all the members of different session coordinators and also to our consultant, Mr. T.B. Pravin, for their relentless effort, and also to all those involved directly or indirectly to make this event successful. I would like to especially mention the work of our tech team for their great support to arrange this virtual program. Last but not the least, I also thank the press, print and electronic media for covering this event. Our heartfelt thanks to one and all for participating in this event. Thank you all. Thank you. Yeah, so thank you. So before this concluding this session, just I wanted to mention that one of our session we missed, that is science for rural technology, science and technology for rural India. We missed that declaration. So that declaration right now came just within 1 second I am declaring. The first prize goes to Bipin Kumar Sharma, delegate ID YSC 13912. On topic quantitative estimation of fluoride contamination in drinking water samples and abolishing it with the help of Sachar Munjas root leaf ash. And second prize goes to Farooq bin Poyen, YSC 11659, design on an automated irrigation scheduling model. And third prize goes to Prachurja Datta. So on the topic reassessing the role of indigenous practice and knowledge in preventing losses and wastage of food grains in Northeast India, delegate ID YSC 20058. So sorry, I forgot. So that results didn't come to us in time. So thank you very much. जजाति जी एक छोटा सा एड्रेस है, ये सूचना थी जी, सूचना थी कल आईएसएफ का समापन समारोह है. सुमित जी, you are muted. Sumit ji, you are muted. नहीं, I am audible. Yes, you are audible now. कल आईएसएफ का समापन समारोह है, तो शाम को 4 बजे का, तो उसमें हमारे उप राष्ट्रपति महोदय जी आ रहे हैं, तो हमें उसको जरूर अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए और उनसे भी मार्गदर्शन मिलेगा. और दूसरा ये है कि हमारा एक्सपो भी चल रहा है, तो सभी प्रतिभागियों से, जो भी एप्लीकेंट्स अटेंडीज हैं, से निवेदन है कि दे आल्सो शुड गो एंड लुक इनटू दैट, वो भी उसको एंजॉय कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा एक्सपो है एंड वी शुड नॉट मिस इट. जी जजाति जी, we can end the session right now. Thank you. Namaskar. Thank you. Namaskar.